Jai Jagannath. Hello guys and welcome back to my YouTube channel Rover Hightail. So today we are traveling from Rayagada to Bhubaneswar. The route we will be taking will be covering Padmapur, Adava, Mohana, Berhampur and then Bhubaneswar. So if you like this video, don't forget to hit the like button, and to encourage me, don't forget to hit the subscribe button. So stay safe, stay healthy. सामान हो गया पैक और टाइम है अभी निकलने का। 400 किलोमीटर की जर्नी है, लगता है 7-8 घंटे में तय कर लेंगे हम लोग। अब दिक्कत की बात यह है कि हम लोग जनरली जाते हैं गुनपुर, पारलाखेमुंडी और इच्छापुरम होके, लेकिन इस बार एक नया रास्ता ट्राई कर रहे हैं क्योंकि एक्सप्लोर करने का मज़ा ही कुछ अलग है। तो देखते हैं क्या मिलता है इस रास्ते पे हमको। Here I have clocked some 100 kilometers and we are moving ahead to Bhubaneswar. I think I am maintaining time. We have started at 11 AM and now it's 12:30. ये सिर्फ एक रिजर्वियर नहीं, आसपास के गांव के लिए जीवन शैली और रोजी रोटी का ज़रिया है। ये उनके लिए पूरी दुनिया है। पहाड़ों के बीच ये नूर है। हर राही के लिए ये एक सुकून है और आँखों के लिए रूहानियत है। अब कुछ 150 किलोमीटर तय करने के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं लुहागुडी में, और यहाँ का जो सबसे फेमस चीज़ है वो है यहाँ का ढाबा। मुझे बहुत सारे सजेशंस मिले थे यहाँ के खाने के लिए, बट अब कोरोना के लिए अब वो तो कर नहीं सकते। लेकिन अगर किसी ने भी यहाँ पे कभी खाया हो तो नीचे
Taptapani is a very famous tourist attraction because of its hot water spring. It is believed to have medicinal properties. Along with this, it is surrounded by lush green flora and majestic hills which provide perfect scenic elegance. Refueling. This place is Coco IOCL that falls between Berhampur and Balugaon. This place has a lot of things like restroom, parking area, dhaba, then laundry services, self-cooking services, and a lot of things. Like they also have dedicated photography points. Chilika Lake is the largest brackish water lake of the whole Asia. Tourists from all over the world visit over here throughout the year. This place is home to a large amount of species, may it be flora or fauna. This place is famous for huge variety of seafoods it offer. Now I am passing by Balugaon. This place is nearby Chilika and this place is also famous for its wide variety of seafoods. This place has a very great dhaba called Chilika Dhaba and it tastes very nice. This place is surrounded by a lot of temples to visit. I am near about Bhubaneswar now. Within an hour or two, I will be reaching over there. आप लोगों ने ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा तो देखा ही होगा और बहुत लोगों की वो फेवरेट मूवी भी रही होगी। तो हाँ, पिघले नीलम सा बहता हुआ ये समा, नीली नीली सी खामोशियाँ,
ना कहीं है ज़मीन ना कहीं आसमां, सरसराती हुई टहनियाँ पत्तियाँ कह रही हैं कि बस एक तुम हो यहाँ, तुम हो यहाँ। हाँ, ज़िंदगी हमें एक ही बार मिलती है, तो आपको अगर किसी भी चीज़ की चाहत हो, आपको अगर किसी भी चीज़ की पाने की उतनी ही शिद्दत हो, तो उसके लिए काम करते रहिए, क्या पता कल हो ना हो।